So, hello दर्शक माने. So in this video we are going to discuss how to apply an AC. So ए वीडियो रे आमे कोन डिस्कस करिबा आमे केमिति गुडे एसी अप्लाई करिबा घरे बसी बसी आमे समस्त जानिछे जमी किनिला बेले एसी दरकार पड़े ओ ए एसी पई हमको मुख्यतः कोनोसी एडवोकेट बा कोनोसी मौरर को हमको दबाको पड़े तो सही जिनस भी आम निजे करिपरिबा किंतु बट प्रोवाइडेड आपनको टिके नॉलेज थिबा दरकार वो टिके कॉमन सेंस यूज कले आपण आराम से करिपरिबे तो चलो तो मो डायरेक्ट आपनको नै जिबी वेबसाइट को वो देखे देबी केमति कोन आपण निजे घरे बसी अप्लाई करिपरिबे सो फॉर दैट पर्पस व्हाट यू नीड टू डू इज फर्स्ट यू हैव टू visit this IGR website तो इथरे गूगल ले आपण फर्स्ट टाइप कले IGR you will find this website which is written as igr.gov.in so এই ওয়েবসাইট রে তুমি ক্লিক করিবো ক্লিক কলা পরে দেখন্তু এই ওয়েবসাইট এবে বাহারি গলা তারপরে দেখন্তু যদি আপন if you have not registered yourself in this portal then better I mean you cannot proceed ahead without registering yourself in this portal. So at first you need to register yourself in this portal, but the thing is that in my case I have already registered myself in this portal, so that's why I am choosing this option where it will be written as just a moment. Yes, here you can see in this tab, in this area here it is written existing user login, something like that. Just a moment. Yes, existing user login. So hence I have already registered there myself, so I am clicking on that option. Otherwise you should have visited that another option which was just adjacent to that. That means you तुमको प्रथमे register करिवा खबो सेठी से वेबसाइट रे. सो चलतु जेहेतु मु रजिस्टर कर सारछि तेणु मोर डायरेक्ट मु लॉगिन करिवि सो एठी मो यूजर आईडी देइतले एठी मो पासवर्ड देइतले पासवर्ड दला परे तापरे मते कैप्चा एठी फिल करिया को पड़ला. Yes, thereafter I need to click on login. तो ये login ऊपर क्लिक करी तो तापर देखो ओटीपी आसीबो ओटीपी आसीबो माने जोटा मो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया है सेठी के ओटीपी आसीगला तो सेठी के ओटीपी जीवो 994487. Yes, so see this is the dashboard. तो ये डैशबोर्ड रे तुमको बहुत किसी ऑप्शन एठी अछि तो जेहेतु आज ये वीडियो रे मु केवल इसी बाबद को कहिया पई चाहूची तेनु मु डायरेक्टली आउ किसी जिंस डिस्कस न करिक डायरेक्ट इसी केमती अप्लाई हबो सेठी बतै देबी. तो देखंतु ए जगह रे देखंतु ए टैबटा बा ए एरियाटा होची इसी अप्लाई सेक्शन बा एटी लेफ्ट पैनल ले भी देखि परिबे ए जो एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट एटी अप्लाई न्यू एसी बा ऑलरेडी जदि किसी अप्लाई करि सारछंती तो ता स्टेटस देखिबा पई एटी जो व्यू एप्लीकेशन स्टेटस ता पर क्लिक कले मन you can see the status of that application whether it has been approved or not. Otherwise if you are applying for fresh you can apply here, you can click here apply new AC. So jehetu mu apply kariba ko jahunchi I will click on that option where it is written as apply new AC, right? So as because I am going to apply a new AC, so that's why I am clicking on this option that is apply new AC. So देखो application टा खुली सारछि तो एठु हमको फिलअप करिवार अछि तो कौन फिलअप करिवा देखंतु फर्स्ट ऑफ ऑल इन माय केस माय क्लाइंट हैज टोल्ड मी दैट ही इज गोइंग टू बाय अ प्रॉपर्टी स्पेशली a piece of land from this खतियान from this ROR. सो से ROR टा मते देइछि तो ROR रु मते अप्लाई करियो खबो बा खतियान रु मते अप्लाई करियो को बिसी तो देखंतु ए खतियान ले मते फर्स्ट देखिबार अछि एटा को जगार माने जमीटा. If you will just go through this ROR you will get to know that the मौजा is of मानत्री तेणु तुम बुझी पार जे एटा मानत्री मौजार एंड थाना स्वर एंड जहाँ भी हो ग्राम आम जानीगले स्वर थाना जानीगले वो एटा तहसिल हूँ स्वर. सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू चूज द SR मीन्स सब रजिस्ट्रार अकॉर्डिंगली आमको चूज करी कहबो सही अनुसार ही आमर इसी बाहरी पारिबो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखंतु सी तो गोटे कॉमन सेंस जो जमीटा जो सब रजिस्ट्री अंडर रे थिबो सहीटी ही हमको इसी अप्लाई करिया कहबो. तेणु फॉर एग्जांपल आम कोठी भी जदी भूल कर देल फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेठी मिलिबोनी माने एक्जेक्ट
केमी कौन मुझे प्राक्टिकली देखेदेवी किंतु आउ गोटे कथा कहीदे से जगह को माने सेमी अप्लाई करने पूर्व आउ गोटे जिनस दुटा जिनस आपको चेक करने पड़ो देखो ये पट्टारे यू कैन सी अंतिम प्रकाशन तारीख बा खजना धार्य तारीख एथे कौन डेट लिखा जाए ना दैट मीन्स इट इज नॉट ए सेटलमेंट पट्टा और इट इज नॉट ए सेटलमेंट आरओआर दैट मीन्स एटा बंदोबस्त फाइनाल है एटा आइदर किणा बिका बा पार्टीशन बा कौन जिनस हो जो फल कि एम पाखक आसी जो माने जो प्रजार एम ना जो पड़ी पाखक आइदर पार्टीशन हो बा कौन कारण हो ये सेटलमेंट पर कौन गोटे ट्रांजेक्शन होगी आसी दैट मीन्स यहाँ हूँ ओरिजिनल खाता नुह बा एटा सेटलमेंट खाता नुह सो आमको कौन करिया को पड़ियो वी हैव टू ट्रेस इट बैक वी हैव टू ट्रेस इट like which one is the corresponding khata of this ROR means which one is the settlement khata of this ROR. So for that purpose you have to go through this khata minutely, then you will find yourself like which one is the settlement ROR of this concerned khata. So in my case see here in that Bishes Anusangiko column which is column 6, in this column it is clearly written as this property or this piece of land which is plot number 732, this was purchased from or this came from khata number 126. see it is clearly written here. तो देखो प्लॉट नंबर 732 कौट आसी लिखाई 126 रु इनफैक्ट ये राइट साइड रे भी मंतव्य कलम रू देखो खारज खाता नंबर 126 रु लिखाई सो दैट मीन्स वी हैव टू गो बैक वी हैव टू सी द खाता नंबर 126 then only we'll get to know whether that one is our original khata or not. Of course that will be our settlement khata I believe because since it is not a buy khata then it is a settlement khata ta mane jodi एटी buy था 120 by something बा कौन जमी एटी अच्छे 528 by 558 ताला आमे जानी थांते it is not a settlement खाता but since the number is in whole number that is 126 so we have to consider that it is a settlement ROR. So we have to we have to see that khata as well. So for that purpose again I am visiting that same website which is Wuleko. See here I'm going back to that same section where I need to choose district, tehsil and village. So everything has already been filled up. I just need to provide that khata number which I found there, that is khata number 126. So let's click on that view ROR. So this is the real settlement khata. Now you see अंतिम प्रकाशन तारीख लिखाई कौन 23/1/1969 दैट मीन्स सी इट इज एडवाइजेबल टू अप्लाई और चेक इसी फ्रॉम दैट डेट माने तुमको कहगला जे तुमको इसी खोलिबा को पड़ियो सही डेट रु किंतु देखंतु एटा इट इज नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल दैट मीन्स सब रजिस्ट्रार रो काम अलग अलग हुए तमे जेमिति जहा करि परिबो बा कोन से रजिस्ट्रार कोन करंती ना लास्ट ट्रांजैक्शन डेट रु एपर्यंत तुम यदि इसी देखे देबो देन दे विल गो अहेड विथ द रजिस्ट्रेशन दे डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम विथ दैट. For example, let's say that I purchased one property in the year 2017 and right now I want to sell that property. So मु 2017 किनिथिला बेले इसी खोलिथिबी that means up to that time that I mean there was no encumbrance. So what the sub registrar will ask is the sub registrar will ask just to show the subsequent transaction from 2017. that means मते 2017 लो एपर्यंत ट्रांजैक्शन खाली देखे देले जदि नील थिबो then they will go ahead with the registration, that they will not find any problem with that. But it is advisable to check from the last date of publication. So for better clarity. So तमे जहाँ भी करो अवश्य टिके खर्च लागिवो टाइम लागिवो कारण ऑफलाइन इसे खोलिबार थिबो तेनु तुमको टिके सेठी ध्यान रखिबार को पड़िबो जदि भी किए कहूछ एमिति करिया पई तमे मु एडवाइस करिवि जे ना तमे एमिति न जाय कि तमे मैनुअली अंतिम प्रकाशन तारीख रो चेक करो वो मूल पट्टा सदा बेले देखो मूल को खाता रु आसी जेमिति आमे एठु जानियोलु कोन एई खाताटी बा खाता नंबर 528 बाय 585 टा आसीची 126 खाता रु देखंतु आउ गोटे भी जानिया पई आमे कोन करिबा ना एठी प्लॉट नंबर अछि 732 जस्ट 732 को आमे केने किछि मारिबानी कंट्रोल एफ मारि कि बा सर्च कर दबा 732 जेइठे ने कोडी गोटे लिखाइ त देखंतु 172 बाय 9 नामजारी मोकदमा नंबर. दिस इज नामो नंबर मीन्स नामजारी मोकदमा नंबर, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन नंबर और म्यूटेशन केस नंबर.
सो एंड सब्सिक्वेंटली दिस 732 खाताटा ए खातरू खारज होइकी से जो खाता को जो 528 बाई 585 की जाइए बोली क्लीयरली लिखा है। सो नाउ वी आर क्लियर दैट दिस इज आवर ओरिजिनल खाता एंड देखो ये अंतिम प्रकाशन तारीख लिखाई वो एटा बाई खाता नुह तेणु इट इज ए सेटलमेंट खाता। सो वी गॉट आवर सेटलमेंट खाता। नाउ वी विल गो अहेड विद द इसी एप्लीकेशन। सो लेट्स गेट बैक टू द सेम वेबसाइट। Now we have to put that applicant name. So see, applicant can be anyone. It can be it can be anyone. It can be a third person. In my case I'm an advocate. I can enter my name as well. But see, ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ମୋ ନା ସବୁଆଡ଼େ ପକାଇଦେବି ତେଣୁ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜନରେ ପଡ଼ିବି କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଇସି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ତେଣୁ ବେଟର କ୍ଲାରିଟି ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଯେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ତା ନା ପକାଇଦିଏ। तो देखो ए केस रे फॉर एग्जांपल एटी जने गोटे ऑफलाइन इसी भी अप्लाई करथिल मु सेउटो रेफरेंस नहीं होची। फॉर एग्जांपल देखो रामकृष्ण साहू आउ ए खातार भी अच्छे देखो रामकृष्ण साहू देखो रामकृष्ण साहू अच्छी तेणु मुझे पकईदेवी रामकृष्ण साहू कृष्ण साहू राइट। सो एंड सब्सिक्वेंटली हियर आई नीड टू प्रोवाइड माय मोबाइल नंबर एज वेल। सो मो मोबाइल नंबर दे दूची and thereafter here it is asking me to declare the property owner name. So property owner name तुमको ठीक से दबाक पड़ो। देखो जदि आ गोटे बड़ ये कन्फ्यूजन बहुत लोग पड़ती। देखो ये 4-5टा प्रॉपर्टी ओनर अच्छी तो मुझे कौन मान जन ना देवी। देखो जदिव ये ऑप्शन अच्छी मल्टीपल ओनर अवेलेबल ए ऑप्शन को मारिकी आम मैं मल्टीपल ओनर इंडिविजुअल ओनर भी दे पारिबा। बट एज सच देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। यू कैन जस्ट सिंपली प्रोवाइड वन ओनर नेम देयर एंड यू कैन गो हेड। सो you won't face any problem, I believe, because I have worked with 3 to 4 SR sub registrar, but I didn't find any such problem with concern to that owner name of that property. ମୁଁ ଦେଖ 2-3ଟା ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି जो एसआर रे काम କରୁଛୁ 3टा ପାଖାପାଖି एसआर रे ତେଣୁ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି। ଏଠି ଜଷ୍ଟ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ନାଉ ନେକ୍ସଟ थिंग इज दैट यू नीड टू प्रोवाइड द एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट। सो दैट इज ऑल्सो नॉट important because it will not be reflected anywhere in the EC. You can give any address of your choice. So here I am just entering Baleswar and village name, let's say Soro and Soro. Now we are done with that basic part. Now let's move on to that important part which is property details. So ei jagare amku dabar अछि को प्रॉपर्टी रो आमे मागुछे इसी बा को प्रॉपर्टी रो हमको इसी दरकार वो केबेठो केते जाय इसी दरकार। देखंतु फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉपर्टी टा दोछि सिचुएट करछि मु ताकू चूज करूछु बालेश्वर रे अछि। सेकंड ऑफ ऑल एटा को रजिस्ट्रार ऑफिस अंडर रे आसुछि। सी अनलेस यू डोंट नो अंडर व्हिच रजिस्ट्रार दिस प्रॉपर्टी बिलोंग, unless you don't know under which jurisdiction or which registrar office your property belongs to, then you cannot apply an AC, right? You can easily identify. If you can't also, you can take help of somebody, or you can also ask me. So I can also guide you like how to identify which is the concerned sub-registrar for that property. Okay. सो नाउ मु जानी आमर हूँ स्वर हूँ सब रजिस्ट्रार। सो मो स्वर को चूज कली आबेठू इसी दरकार। देख अंतिम प्रकाशन तारीख ही आमको इसी खोल पड़े। सो जदिव ये अंतिम प्रकाशन तारीख हूँ 1969 किंतु आमर ऑनलाइन इसी एपर्यंत 1969 रु आसी ना 1995 अवेलेबल अच्छे। तेणु मुझे 95 खोलि आदि तुमको पुराना दरकार ताहले तुम ऑफलाइन वे रे अप्लाई करिया को पड़िबो बाय विजिटिंग द एसआर। सो मु भी सब रजिस्ट्रार विजिट करके ऑफलाइन इसी अप्लाई कर देछि किंतु फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस आई हैव टू गेट दैट अप टू डेट इसी एज ऑन डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। सो मु आम तो रजिस्ट्रेशन हबार अच्छी जस्ट 2-3 दिन पर ये जो क्लाएंट रो तेणु मु आज बसिकी अप्लाई करूँ इसीटा। तेणु देखो 2026 मत ये चूज करिया पड़ो जनवरी 1 1995 वो केते वर्ष जाए अप्लाई करी टू डेट। देख टू डेट तो सब बेले अप टू डेट माने मोदी 15 जून देदेवी ताहले एटा करेक्ट हो किंतु 15 जून देदेले मते अधिक चार्जेस लागिवो। तेणु याकू कौन करे कहीं ना अधिक चार्जेस लागिवो तार गोटे अलग हिसाब अच्छी सेटा मु पुनी केबे अलग बुझेबी। किंतु मन रखु आपन 13 वर्ष इसी सदा बेले खोलिबे 13 वर्ष रु अधिक खोलिबे माने 13 वर्ष माने देखंतु अंतिम प्रकाशन तारीख तो खोलिबे बट 13 वर्ष लेखा ब्रेक करी करी खोलिबे।
खोलेंगे कारण जदि एका बेले आप 26 वर्ष 50 वर्ष क्या आप्लाय करदे तो बहुत टंका पड़ो तेणु सेमती करेंगे आपण सेविंग कहूँ किंतु ऑब्वियसली करेंगे किंतु जेहेतु आम रेगुलर करें जानी सारी केते वर्ष खोल जाए तेणु जदि भी आप कन्फ्यूजन पड़ुन 13 वर्षटा केते तारीख को हम यू कैन नो टेक हेल्प ऑफ गूगल ऑल्सो like see here also I am taking help of Google to determine which will be that date date calculator so 1/1/1995 plus 13 years सी आसीगला कौन 2008 जनवरी 1 2008 तो देखो मु जनवरी 1 2008 मारिबिनी मु 31 डिसेम्बर 2007 करी देखु डिसेम्बर सॉरी 2007 डिसेम्बर 31 डिसेम्बर 2007 तापर तहसिलटा आमर कौट थिला से जो प्रॉपर्टी रो सेटा थिला सोरो विलेज विलेज ना कौन थिला 103 बस तो एति देखु रेडी हो गला तो यहाँ 13 वर्ष इसी मु खोलुची कारण 1995 रु 1 जनवरी 1995 रु 31 डिसेम्बर 2007 13 वर्ष जदिओ ये गोटे दिन एड कराई कि गोटे दिन कम नौ कारण किसी प्रोब्लेम नहीं कारण सब्सिक्वेंटली मत अदर इसी भी खोल पड़ो वो से एडजस्ट करदेवी देख हो गला तेणु ये मत खाता नंबर दबार अच्छे कौन खाता दबार अच्छी माने जो खातार से किणव प्लस ता ओरिजिनल खाता जमी यही खातार से किणव ना तेणु देखो ये खाता नंबर मुझे देली है प्लस मत प्लॉट नंबर भी दबाक पड़ो प्लॉट नंबर कौटी अच्छी देख 732 ये प्लॉट नंबर अच्छे तो 732 प्लॉट नंबर भी देदेलु अच्छा तापर एरिया एरिया केते एठी अछि देखंतु 17 डिसिमिल अछि तो एठु 0.17 एकर दे देली ये हे गला गुटे ऐड हे गला मानत्री रो सरला किंतु केवल आमर सहीटा केवल दबार ना तार पुनी ओरिजिनल खाता दबार अछि ओरिजिनल खाता माने केते 126 खाता नंबर दे देलु हला प्लॉट नंबर 126 रो केते अछि हमर जेहेतु सही ट्रांजैक्शन टा हबो तेनु 732 टा ही हम एठी प्लॉट नंबर दे देबु आउ किसी आमर दरकार ना आउ से जी प्लॉट नंबर अच्छे आम दरकार ना देखो ये कन्फ्यूज हेबेनि ये 723 तो ना से खातार तेणु आम ये कहीं देलु सॉरी 732 तो ना ये कहीं देलु देख 732 नथिले भी कौन है ये 732 टा थिला जोटा कटिकी जाइए से खाता को तेणु आम दौचु बुझे तेणु गला 732 था ये एरिया भी देदेलु 17 डिसिमिल ओके ठीक अच्छे ऐड करदेलु सरला तो एति बुझंतु प्लस मोर तो एक्स्ट्रा आउरी खाता अच्छी कारण से आउरी किसी ट्रांजेक्शन अच्छी तेणु मुझे से गुड़िक एंट्री कर दिए से बेल 102 खातार 1232 0 1333 15 डिसिमिल ऐड 1334 2 डिसिमिल 6 डिसिमिल तो देखो ये पुराना खाता प्लस नुआ खाता लगे मत 4 3 7टा खाता 3 3 सॉरी 7टा प्लॉट रे डिटेल्स मोर दरकार तेणु मुझे 7टा डिटेल्स एंटर करदेली प्लस तुमको क्रॉस चेक करने को पड़ो देख डिस्ट्रिक्ट बालेश्वर रजिस्ट्रेशन ऑफिस सोर ये डेटा ठीक अच्छे सोर माणित्री ठीक अच्छे मौजा ठीक अच्छे सोर ठीक अच्छे रामकृष्ण साहू ठीक अच्छी तापरे खाता नंबर 528 बाई 585 ठीक अच्छी 732 126 732 ठीक अच्छी 102 1332
102 1333 1334 1334 बाई 2665 सॉरी 2565 तेणु ठीक अच्छी सॉरी एट टिके देखी दिए 102 कारण यहाँ कन्फ्यूज हेनी कारण यहाँ आउ गोटे खाता भी मत जेहेतु सेम ओनर तेणु मत तार भी जेहेतु अन्य ट्रांजैक्शन भी अच्छी मुझे सेगुड़ी भी देवाक पड़ू कारण एथर भी तार किणवार अच्छी बट एवं नुहे पर 1334 बाई 2565 2565 ठीक अच्छे तेणु ये होगला 426 426 सातटा केमती होला 426 426 ठीक तो अच्छे ठीक अच्छे तब देखो प्रोसीड कला आसीगला बालेश्वर स्वर ठीक अच्छे स्वर ठीक अच्छे 2007 जाए एग्री ठीक अच्छे एग्री 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 तो एग्री क्लिक करेंगे एग्री कलापर देखो अमाउंट देखेदेला तो अमाउंट आमको पे करार अच्छे तो देखो 13 वर्ष इसी आमको 476 टंका पेमेंट करिया पड़ला तो यहाँ पर किसी ना आमको जस्ट टे वेट करिया पड़ो तापर ऑटोमेटिक लॉग आउट हो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो देखो वेट करियो किसी केने क्लिक करिया दरकार नहीं जस्ट टे वेट करिवे देखो एबे लॉग आउट होगा तो भावेनि कहीं किसी एरर है आमर यहाँ सक्सेसफुली बर्तमान अप्लाई होगा देखो मुझे देखईदेवी थोड़े देखई दूची अप्लाई हो कि ना आउ थे मुझे ओटीपी देली लॉगिन कली 184178 184178 देखो आप्लिकेशन मारिदेली बर्तमान व्यू ट्रांजैक्शन मारिकी देखी हम ट्रांजैक्शन किंतु प्रोसीड तुम मारे भी किसी हो पारनी कहीं आसबनी आप्रुवाल एपर्तंत होना है तेणु देखूँ देखेदेला ट्रांजैक्शन देखेदेला किंतु एबे किसी हो पार ना कि आम सक्सेसफुली जाने देख ये अप्लाई होगुड़िक सब एगुड़िक बाहर जीव काली गोटे दिन 2 दिन लगे बाहर जीव तेणु देखो एमती एसी अप्लाई कराए मुझे आहरी बर्तमान तापर सेकेंड एसी भी अप्लाई करी बट फॉर नॉलेज पर्पज दिस मच इज एनफ आई बिलीव तो देखो तले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मो कॉन्टैक्ट्स भी देती तो कहार जब भी कौन हेल्प पड़े तो मत कॉन्टैक्ट करेंगे मु बतईदेवी केमती कौन हो आपको भी सर्विस दे पारि किसी असुविधा तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।